So hello guys, my name is Durgesh and you are watching Data Science with Durgesh. Today we will understand one of the most powerful algorithm, that is linear regression. So if you are a fresher, then you will must know this algorithm because this is the foundation of all algorithms like decision tree, logistic regression and etc. So let's begin. So, what is regression? Regression means predicting continuous values. For example, marks, car price and etc. बेसिकली जब हम नंबर प्रेडिक्ट करते हैं तो वो रिग्रेशन में होता है, और जब हम जहाँ क्लास की बात आती है लाइक यस नो पास फेल spam not spam, so this is a classification problem. You must know about it. So what is linear regression? So basically linear regression is a supervised machine learning technique in which we are used to describe the relationship between dependent variable y and one or more independent variable x, and the equation of the linear regression is y is equal to mx plus c, where y is we are predicting those values, that is y, and x is those feature we are input in the field, that is x, and m is a slope means how much x are changes when y value input, and c is a slope when y then x is equal to 0. So that is about the linear regression equation. So my main goal is to minimize the my main goal is to find the best fit line so that can minimize the error difference between predicted and actual values, and that is the main goal of the linear regression. So how we are calculating the error? Using mean squared error and one optimization algorithm, that is gradient descent. We adjust the value of m and c in the MSE, mean squared error. m means slope and c means intercept, means वो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, जो आपका m मीन स्क्वायर एरर में m और c रहता है उसकी वैल्यू को एडजस्ट करता है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की यूज से. वो एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जो कि आपको हर जगह काम आएगा. आप इसे अच्छे से पढ़िएगा डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होता क्या है. इसमें मतलब मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट होता है. हमारा मिनिमा पे जब आके लाइन मिलता है तब वो सही वैल्यू को एडजस्ट कर पाता है, यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है. इसको आप डिटेल में पढ़िएगा जो कि आपको हमेशा काम आएगा. डीप लर्निंग तो मतलब हर जगह ये एल्गोरिथम मेनली यूज़ होता है. so that is about it. And last I talk about what is the assumptions of linear regression. So first assumption is linearity. So my model was find a linear regression between dependent variable and independent variable, and second homoscedasticity, and third normality of error, and fourth independence of errors. So that is the assumption of the linear regression that you must know. And thank you for watching this video guys. Don't forget to like, subscribe and comment in this video because आपको यहाँ पे easy explanation मिलते हैं डेटा साइंस के टॉपिक के बारे में, और हर दिन एक एक वीडियो आते रहेंगे इसी तरह इजी वे में. हम पूरा डेटा साइंस के हर एक एल्गोरिथम को डिटेल में पढ़ेंगे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, कि इंटरव्यू में कैसे क्लियर करना है.